Good morning, student. So see, today I am going to take the third class on the chapter sets and relations. Okay. So already I have taken two classes on this chapter, and I have discussed about the first exercise, that is exercise 1.1. Today I will start the next exercise, and before starting the next exercise I will discuss about the theory parts that will be required here. Okay, so let us start. Set. This is a third class. This is a third class. This is a third class. So this is a third class on the exercise. So see. First, let me tell you the definitions, okay, which are related to the exercise 1.2. So, first definition is null set. Null set. Null set. Null set is also called void set. We can denote it by void set also. Null set. Or it is also called empty set or empty set. Empty set. So what is I am going to discuss today? Null set, void set and empty set. Okay. See, null set, void set and empty set, it is denoted by phi. It is denoted by phi because I told you that every set is always denoted by some capital letter. Sometimes we denote it by A, sometimes we denote it by B, but sometimes we denote it by C. But null set, when we talk about null set, this is the symbol of phi. Okay, it is denoted by what? It is denoted by phi. So whenever we will see phi, we must understand that this phi means what? It is a null set, or it is a void set, or it is an empty set. Now the question is, what is the meaning of null set? What is the meaning of empty set? Or what is the meaning of void set? So let definition. What is the definition null set? The definition is, if a set has no element, if a set has no element, if a set has no element, then the set is called null set. Or we can say void also. Instead of null we can write void also. Instead of null we can write empty set also. Okay. So if a set has no element, then the set is called a void set. Okay. So null set or void set or empty set, it is denoted by phi, and it is this one. We shall write the second bracket, and inside the second bracket we shall put no element. We are not going to put any element inside the second bracket. So this is called a null set. Okay, this is the representation. We can write phi also, we can write this one also. Okay, so let us take some examples of null set and void set. How we shall get these types of sets? So I am writing the set by set builder form first. Suppose there is a set. Okay, there is a set, and this is X, such that X is a natural number. Less than 1. So I told you that whenever a set is written in the form of X, means it is in the set builder form. So when it is in the set builder form, if we convert it to the roster form means the elements will be directly visible. So what will be the elements? What will be the values of X? X is a natural number less than 1. We cannot write any element because
below 1 there is no natural number. Natural number starts from 1, so we cannot write any element less than 1. So यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वी कैनॉट राइट एनी वैल्यू, क्योंकि हम लोग अगर जीरो लेंगे जीरो होल नंबर का अंदर में आ जाता है, ठीक है. सो देयर विल बी नो एलिमेंट, तब इसका अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. सो दिस इज ए नल सेट, ठीक है. सो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ ए नल सेट. अगर क्वेश्चन पे देगा कुछ, कभी कभी क्वेश्चन पे तुम लोग को पूछ सकता है कि इज इट ए नल सेट, तुम लोग का आंसर क्या होगा, यस इट इज ए नल सेट. बिकॉज हम लोग अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, रोस्टर में फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे. कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे मतलब अंदर में कोई एलिमेंट है ही नहीं. दैट मीन्स इट इज ए नल सेट, ठीक है. अभी एक्सरसाइज 1.1 का जो स्थान है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नल सेट, ठीक है. नेक्स्ट देखो, what is the definition of singleton set? Singleton set, singleton set. सिंगलटन सेट, इसका कोई नोटेशन नहीं है. जैसे हम लोगों ने जब नल सेट लिखा था, नल सेट को हम लोगों ने किस नंबर से रिप्रेजेंट किया था, 5 से. किस लेटर से रिप्रेजेंट किया था, एक नंबर 5. सो इट इज एन इंटरनेशनल सिंबल, ठीक है. 5 मतलब इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट. लेकिन सिंगलटन सेट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. वी कैन रिप्रेजेंट द सिंगलटन सेट बाय एनी लेटर, ठीक है. सो सिंगलटन सेट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है डायरेक्टली. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सिंगल, सिंगल मीन्स इट इज वन. सिंगल मीन्स इट इज वन. दैट मीन्स इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, देन द सेट इज सेड टू बी ए सिंगलटन सेट. If a set has only one element, if a set has only one element, then the set is called a singleton set. If a set has only one element, then the set is called a singleton set. So this is a definition. If a set has only one element, then the set is said to be a singleton set. Okay, so this is a simple definition. सो एक सेट के अंदर में अगर एक ही एलिमेंट होगा, देन द सेट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट. सो एक एग्जांपल लेता हूं मैं. सपोज देयर इज सेट, इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखता हूं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्मेट में जो भी लिखा जाता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स. एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली विजिबल. सो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर. x is a natural number less than 2. So 2 से छोटा नेचुरल नंबर सिर्फ एक ही है, that is 1. So inside the set only one element is there. There is only one element inside the set. Since there is only one element inside the set, that means it is what? It is a singleton set. So this is the definition of singleton set. Clear? Next is finite set. Finite set and infinite set. Next set is finite set, set and infinite set. Set.
Definition of finite set and infinite set. So see, finite, what is the meaning of finite set and what is the definition of infinite set? Finite set means if a set has finite number of elements, finite number of elements, if a set has finite number of elements, if a set has finite number of elements, then the set is said to be a finite set. If a set has finite number of elements, then the set is said to be a finite set. ठीक है? अभी देखो ये जो डिफिनेशन है, अगर हम लोग एक सेट ले लेते हैं यहाँ पे, सेट का अंदर में 1 एलिमेंट है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, 17 है, so these are the elements. So देखो इस सेट पे एलिमेंट्स क्या क्या है, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7. दैट मीन्स वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सेट. कितना एलिमेंट है, देयर आर 7 एलिमेंट्स इनसाइड द सेट. सिंस 7 इज a finite number because it is known to us, whenever a number is known to us it is said to be finite. यहाँ पे टोटल 7 एलिमेंट्स है, so the number is known to us, so this is the finite set. The or another way we can say, if the last number is known to us, if we can find what is the last number, then also it is a finite set. अगर हम लोग को पता चलेगा कि लास्ट नंबर 2 क्या है, देन ऑल्सो इट इज अ फाइनाइट सेट. क्योंकि लास्ट नंबर अगर पता चल जाएगा तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं. सो इफ ए सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन द सेट इज सेड टू बी ए फाइनाइट सेट, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट सेट. Next is infinite set. If a set has infinite number of elements, if a set has infinite number of elements, if a set has infinite number of elements, then the set is said to be, then the set is said to be an infinite set. So this is the definition of infinite set. So see, what is the meaning of infinite set? What is the definition of infinite set? Suppose there is a set, elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, it is going on like this. So there is dot. So see, the last element we do not know. What is the last element? And we can, since the last element is not known to us, so we cannot count the number of elements. Since we cannot count the number of elements, that means it is a what? It is an infinite set. Clear? Since we cannot count the number of elements in the set, so it is said to be an infinite set. So this is the definition of infinite set. Okay. Next, what is the next is equal sets. Two equal sets. Equal sets. Equal sets. Two sets
are said to be, two sets are said to be equal if they have equal number of elements, equal number of elements. Two sets are said to be equal sets, equal if they have equal number of elements and all the elements of one set belong to the other. So this is the definition of equal set. So let me tell you, suppose there are two sets, one set is A, here the elements are A, L, K, G, H. B equal to G, H, K, A, L. So these are the two sets I have considered. Okay, so I have written what two sets are said to be equal set if they have equal number of elements and all the elements of one set belongs to the other. Okay, so first of all, if these two sets are equal, there are two conditions. They must have equal number of elements. So what is the number of elements in the first set? 1, 2, 3, 4, 5. What is the number of elements in the second set? 1, 2, 3, 4, 5. So the set A has 5 elements, the set B has 5 elements. That means number of elements is same. So one condition is satisfied. What is the other condition? You see, all the elements of this set must belong to this set. So let us take A first. A, you search A is there or not? Yes, A is there. So it is there. L is there or not? L is there or not? Yes, L is there. So it is also there. ठीक है? यहाँ पे K यहाँ पे है कि नहीं? है. So ये भी है. G यहाँ पे है कि नहीं? है. G भी है. H है कि नहीं? H भी है. So यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट B का अंदर में है. So these two sets are equal. So we can say A equal to B. So we can say these two sets are equal sets. So in this way we can define two equal sets. ठीक है? So आज मैंने definition जो दिया, फर्स्ट क्या definition दिया? फर्स्ट null set का definition दिया, फिर मैंने सिंगलटन सेट का definition दिया, फिर फाइनाइट सेट का definition दिया, फिर इनफाइनाइट सेट का definition दिया, फिर टू इक्वल सेट्स का definition दिया. ठीक है? अभी देखो एक्सरसाइज पे जो सम्स है, एक्सरसाइज में जो सम्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट. ठीक है, हम लोग को पूछा कि क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे जो सेट्स है वो वहाँ पे से कौन सा नल सेट है. सो आई थिंक यू कैन डू इट. यहाँ पे तुम लोगों को पूछा कि नल सेट कौन टू है. अगर सेट जो सेकेंड ब्रैकेट है, सेकेंड ब्रैकेट का अंदर में अगर तुम लोग कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाओगे, मीन्स इट इज अ नल सेट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट मीन्स लास्ट एलिमेंट हम लोग देख पाएंगे, लास्ट एलिमेंट क्या हम लोग को पता चल जाएगा, और वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है? स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 3 पे जो एलिमेंट्स है वहाँ पे कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. ठीक है? एक काम करो, तुम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो है, यू ट्राई टू डू सॉल्व द क्वेश्चंस. 1.2 का आई थिंक यू कैन डू इट. यहाँ पे इतना भी डिफिकल्ट सम्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुमको बोलना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है, कौन सा सेट नल सेट है, सिर्फ यही बोलना है. और लास्ट में और कौन सा सेट इक्वल्स है. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दो सेट दे दिया, एक ए सेट ए दिया, एक बी सेट बी दिया. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं, हम लोग को देखना है कि
इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि नहीं, फर्स्ट सेट का सब एलिमेंट सेकेंड सेट में होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। सो यू कैन डू 4 ऑल्सो, ठीक है। सो यू ट्राई टिल क्वेश्चन नंबर 4. Okay, so after that if you have any problems I will discuss it. After that I will start the next exercise. Okay, thank you.